Just a minute, guys. Listen to her. Yeah, Priya, come again. What are you asking? In order to is a conjunction, guys, and it means के लिए. When you use in your conversation in sentences for or for plus gerund, हम ऐसे बोलते हैं ना के लिए. मैंने ऑफिस जाने के लिए कार खरीद ली है, या फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए. ठीक है, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए हेल्दी रहने के लिए. तो whenever you want to use के लिए in your English conversation, you have to use in order to. However, for you can also use, that is also fine. For you can use for that, no worries. But if you want to flavor your conversation and you want to reduce your repetition of the words, you can use in order to. This is conjunction. Right, you can note down. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट शुड मेक सम स्ट्रिंजेंट रूल्स या फिर स्ट्रिक्ट रूल्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉल्यूशन. इन ऑर्डर टू के लिए, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो यू शुड एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. फिट एंड हेल्दी रहने के लिए, इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी यू शुड डू एक्सरसाइज, या फिर यू शुड एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू स्टे फिट एंड हेल्दी. तो जहां पे भी आपको के लिए यूज करना है तो आप इन ऑर्डर टू यूज कर सकते हो. यू कैन फ्लेवर योर कॉन्वर्सेशन बाय यूजिंग दिस conjunction. However, you can use for as well, no worries. I bought a car in order to get to office, in order to reach office. Right, very good. Yeah.